Another important result that is named as result 2, that is lemma 5.2.5. Let x1, x2 up to xn be the random sample from a population with mean mu and variance sigma square less than infinity. Variance less than infinity means कि इसका variance जो है वो exist करेगा. Then these results will hold. Then expected value of x bar that is equal to mu, variance of x bar that is equal to sigma square over n, and expected value of s square that is sigma square. These are the results which we will use further in our further derivations. अब हम इनका proofs की तरफ जाते हैं. A part का proof जो है that is expected value of x bar that can be written as expected value of 1 over n sum xi. As you know that the expected value is only apply on the random variable, so we can write it as 1 over n sum expected value of xi. क्योंकि सम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई पे अप्लाई हो रहा है, एक्स आई बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई हमें एक न्यूमेरिक क्वांटिटी देगी, तो ऐसी सूरत में सम जो है ये हमारे पास एन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वी कैन राइट इट एज 1 ओवर एन इंटू एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई. तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई जो है इसको हम x1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल्स हैं x1, x2 अप टू xn दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो all have a same value. तो expected value of x1 जो है we can write it as a mu. इसी तरह हम second part को भी देख सकते हैं. Second part है basically that is the variance of x bar. On the same line we can write it as variance of x bar जो हमारे पास value है 1 over n sum xi, and that is equal to वेरियंस की एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी कांस्टेंट के ऊपर हम वेरियंस को अप्लाई करते हैं तो ये जब बाहर वेरियंस के आता है तो ये स्केयर में कन्वर्ट हो जाता है. तो 1 ओवर n दैट इज ए कांस्टेंट, जब हम इसको बाहर लेके आएंगे तो दैट इज 1 ओवर n स्केयर एंड सम वेरियंस ऑफ एक्स आई. अगेन वेरियंस ऑफ एक्स आई दैट इज ए न्यूमेरिक क्वांटिटी, जब सम इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो दैट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ n value. So that is n into variance of xi. Again, the xi are identically distributed, so we can write variance of xi as a variance of x1. So that is equal to 1 over n into variance of x or x1, and that is equal to 1 over n, or variance of x that is equal to sigma square. So that is equal to sigma square over n. That is the second part. Similarly, we can also prove the third part, that is expected value of s square that is equal to expected value of s square basically is a variance. So we can put down the formula of variance, that is 1 over n minus 1 into sum xi square minus sum xi whole square over n, and that is equal to expected value of 1 over n minus 1 into sum xi square minus, we can write it as nx bar square, and that is equal to expected value of 1 over n minus 1. Expected value को now you can apply on the variables, so that is 1 over n minus 1 into sum जो है ये n में convert हो जाएगा, and that is expected value of x square. We just write down only x square instead of xi because all are the identically distributed, minus 1 over n minus 1 n into expected value of x bar square. We know that जो हमारे पास expected value of x square है basically that is equal to
सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू। वो कैसे? वी नो दैट सिग्मा स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो वी नीड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स जो है ये म्यू के बराबर होता है, ये म्यू स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। सो वी कैन पुट इट हेयर, दैट इज 1 over n minus 1. We can write it as n over n minus 1 into, that is sigma square plus mu square minus n over n minus 1, और expected value of x bar जो है ये basically that is equal to expected value of x bar square, that is equal to sigma square over n प्लस म्यू स्क्वायर। ऑन द सेम लाइन जैसे ऊपर मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर लिखा है, इसी तरह हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर ओवर एन प्लस म्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसकी जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज सिग्मा स्क्वायर ओवर एन प्लस म्यू स्क्वायर, और इसको हम अलजेब्रिकली जब सॉल्व करेंगे तो वी विल फाइंड द डिजायर्ड रिजल्ट विच इज सिग्मा स्क्वायर। ये कुछ टर्म जो हैं ये आपस में कट जाएंगी और हमारे पास जो डिजायर रिजल्ट होगा दैट इज सिग्मा स्क्वायर।